flowchart. So here, what do I mean by algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure to solve the particular problem. So you have to use some logical steps. With the help of that logical steps, we can solve any problem. So, for example, with the help of computer system, I want to make a one program. In that program, what I want to show, I want to show only addition of two numbers. So, to add the two numbers with the help of programming language or with the help of coding, so what are the steps we have to take? So that steps we can show with the help of algorithms. And in algorithm, it is language independent. It means with the help of algorithm, by using just simple English language, we have to write down the steps, what we are going to do. For example, if I want to do activity, any activity, so to perform those types of activity, what are the steps are required? So, for example, like preparing a tea. Suppose I want to take a tea. So, to prepare the tea, what type of steps we have to use? So, same like in a programming, you want to perform the addition of two numbers. So what are the steps are required that you have to show with the help of algorithm? So algorithm is a complete, unambiguous, finite number of logical steps to solving the specific problem. So to solve the specific problems, for that the step one will be the identification of input. So to add the two numbers, what type of input we have required, that we have to identify. Then taking this type of input. So what will be the output? Or you have to predict the output, what output will be kept. That is called as the identification of output. Then identification, the processing operation. Which types of main operation is used? Like if I want to add a two number, for that I have to perform the addition of two numbers. So the addition is my operation. So with the help of that addition, I can add the two number. Then processing definiteness. It means we have to process. Then processing finiteness, whatever the processing we are doing, it should be a finite. Means there should be an end. Then the process will start. It should end. It not go into the infinite steps. So addition of two numbers is first number. Then second number we have to add, and whatever output will be get, that will be our output. So it should be a finite. And processing effectiveness. Effectiveness means what? Whatever the result is given, it should be a reliable, it should be a correct result. So these are the some steps we have to check before writing the algorithm. So algorithm characteristics, it should be a correctness, it should be a correct, it should be a efficient, it should be a clarity, it should have clarity, it should have a specific input. So addition of two numbers is we need a two numbers. So number is our input. Then it should be a finiteness, it should be finished, it should be execute, it should be after getting the output, it should be a stop. And then definiteness. So whatever output will become, there should not be any ambiguity, it should be clean. Okay. So take one example. In this example, what I want to do, I want to take an average of three numbers. So if you want to write a code to take the average of three numbers, so how you are going to write the algorithm? So by writing the algorithm, the steps one will be from your algorithm. Step one will be read the number A, B, C. This read the number A, B, C is what? You have to ask the user enter the number 1, num 2 and num 3. That is A, B and C. Then convert the sum of A, B and C with, we have to add count the numbers, that is called as compute the sum of A, B, C with the first addition operator, that is plus operator. Then whatever numbers we are getting, we are taking three inputs from the user. So we have to divide that number. So divide the sum by 3. So whatever the addition will be there, num 1, num 2, num 3. So the complete addition we have to divide by the 3 because we are getting the 3 number. And then whatever the addition we got, that addition again we have to store into the another variable. So keep the result in a variable b. So you can take any variable. For example, here we have take a variable as a b. Then whatever the result we have stored into the b variable, that we have to print. So print the value of b. So again you have to print the value of b. And then last one, it is end of your program. So this is one simple example
to find the average of three numbers. So what we did here, we just only in the first step, we take the input from the user in the form of three numbers. Then we add these three numbers, and then whatever the addition output we have, that we have divided by the num3, because we already taken three numbers and we are going to get the average of three numbers. Now whatever the value we got, that we have to store into the another variable. So here we take as a variable d, and then we have to print the value of d. And in the last end of the program, it means it is the end of the program. So in this, you will find that the ABSV d, we call it as a variable. So currently, you should only remember that a variable is a container in which we are going to store the values temporarily, or we are going to store the values for further use. So here, variable means you have to consider that it is one type of container. Okay. So with that, we are going to store the value. So in further units, we will cover what we will by variable, how we are going to store the value. That we will cover. But currently, you have to remember only variable means it is the container. So when we talk about the advantages of algorithm, so advantages of algorithm means it is comprehensive. It should be independent of programming language and definite procedure. Okay, comprehensive means that algorithm are true and guaranteed the correct solution. So whatever algorithm we are going to write, it should give the correct output. And whatever algorithms we are going to write, it should be a program, because it should be a language independent. Okay? The layman also will able to understand what we have written. It should be a definite procedure. It means it should end. Whenever it will start, it will take time, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, but after the time, after the calculation, it should be a stop, it should be finished. So that is definite procedure. Okay? And when we talk about the disadvantages, sometimes it may time consuming, sometimes it took a mental effort, because sometimes we have to work on the logic. If in my algorithm, in my program, there is too much logic, so there will be a complexity. So that is the algorithm. In Hindi, in a simple way, what they mean by algorithm, algorithm किसे कहेंगे आप? Algorithm मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है कंप्यूटर सिस्टम से, या फिर आपको कोई कोड लिखना है, या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपको जो कोड लिखना होगा, उस कोड को लिखते वक्त आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करोगे, और जो कोई भी आप वर्क करने वाले हो, जो कोई भी आप कोड लिखने वाले हो, वो कोड आपको जो स्टेप्स में आपको लिखना है, सिंपल कम से कम कीवर्ड्स यूज करके, और इसमें कुछ लॉजिक हो, उस लॉजिक से आपको कम से कम वर्ड्स में आपको लिखना है, और वो algorithm कंप्लीट करना है, बट इट शुड बी अ स्टेप बाय स्टेप. इट मींस अगर पहले स्टेप से खत्म होती है तो सेकंड स्टेप स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड स्टेप खत्म होती है तो थर्ड स्टेप स्टार्ट होनी चाहिए. इट मींस इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. सो द एल्गोरिथम कैन बी रिटन विद अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. उसके बाद में हम लोगों ने देखे कि इसके एडवांटेजेस क्या है. कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. इट मींस का जो एल्गोरिथम है उसमें आप कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट देना चाहिए, और जो एल्गोरिथम आप लिखोगे वो कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए. जैसे कि कोई कहना है तो सी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, तो एल्गोरिथम ना ही सी लैंग्वेज स्पेसिफिक होगा और ना ही कोई अदर लैंग्वेज स्पेसिफिक होगा. ये आप सिंपल एक नॉर्मल लैंग्वेज भी लिखोगे, डिपेंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो द नेम एंड और द simple the person who is not having very computer background, he will able to understand your algorithm. And it should be a definite procedure, means the algorithm should be end. So whatever you have start, it should be end. और अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो समटाइम्स इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज अगर आपका कुछ टीडीएस सॉफ्टवेयर होगा, तो टीडीएस सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप काम कर रहे होंगे तो एल्गोरिथम लिखते वक्त आपको डिफिकल्टी आ सकती है, और उसके लिए टाइम जा सकता है. एंड इट टुक्स मेंटल एफर्ट आल्सो. अगर के प्रोग्राम में अगर कुछ लॉजिक है, और इस लॉजिक के लिए अगर आपके लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना है एल्गोरिथम थ्रू, तो उसके लिए आपको कुछ मेंटल एफर्ट लेने पड़ेंगे. एंड उसके अंदर प्रोग्राम में बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, अगर आप कुछ लूप्स वगैरह यूज करना है तो आपका प्रोग्राम जो है या आपका एल्गोरिथम जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकता है. ये हो गया आपका एल्गोरिथम. नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लोचार्ट. Whatever we are going to write in an algorithm, the same thing we have to show with the help of flowchart. So flowchart is nothing but the historical representation of our algorithm. Okay, so whatever steps we have written, that we have to show with the help of some symbols, or
with a picture representation. That is called as flowchart. Okay. So say flowchart is also a step-by-step procedure, but we have to use some symbols. Okay. So when we talk about the characteristics of flowchart, so in a flowchart we are going to use some symbol. We are going to use flow direction, and it shows some clarity. Because while reading the algorithm, sometimes we are not getting any clarity. But with the symbols, we are going to get the clarity. Again, it has a hierarchy. If you want to connect logic with it, if you want to show some conditional statement, so you can do for the hierarchy. And then it again shows the boundary. So couple problem होगा वो algorithm में आपने mention किया उस algorithm से आप क्या कर सकते हो आप modularize कर सकते हो yourself फिर सब frictioners को डिवाइड कर सकते हो और उसके आप फिर भी फ्लोचार्ट ड्रॉ कर सकते हो जो कि आपको हेल्पफुल है ठीक है सो अगर आप फ्लोचार्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिंबल्स यूज होंगे अगर आपको फ्लोचार्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज होंगे जैसे कि ओवन ओवन हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा जो भी फ्लोचार्ट होगा वो स्टार्ट और स्टॉप करने के या स्टार्ट और एंड करने के लिए अगर इसके एल्गोरिथम में कुछ इनपुट्स होंगे कुछ इनपुट्स आपको यूजर से लेना है या कुछ आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे पैरेललोग्राम अगर आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी है जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर असाइनमेंट यू आर गोइंग टू असाइन समथिंग और आपको ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज करोगे रेक्टेंगल शेप अगर आपको कोई डिसीजन शो करने हैं in your program you have to go for the conditional statements or some repeat statements for that you have to use the diamond symbol for showing the decision but sometimes in your program you want to go for the step 1 step 2 step 3 so for that we are going to use the flow lines or we can say it is the arrow line और अगर आपका एल्गोरिथम जो है सॉरी आपका जो फ्लो चार्ट है वो अगर मिक्स पेज के ऊपर जा रहा होगा या फिर आपको वही फ्लो चार्ट आपको कंटिन्यू करना है उसके साइड में तो उसके लिए आप कुछ कनेक्टर्स यूज कर सकते हो जैसे कि ऑन पेज कनेक्टर्स ऑफ पेज कनेक्टर्स सो ये सर्कल और ये पैरेललोग्राम जो सिंबल दिख रहा है दिस सिंबल्स आर यूज्ड फॉर द कनेक्टर सो सिंबल्स है जैसे कि सिंबल्स में से कैसे हम यूज करेंगे कॉमन फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप पैरेललोग्राम फॉर इनपुट एंड आउटपुट फॉर प्रोसेसिंग वी आर गोइंग टू यूज रेक्टेंगल कोई डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे डायमंड सिंबल्स अगर आपको फ्लो लाइंस यूज करने हैं या फिर दिखाना है कि आपका ग्राफिक फ्लो कैसे जा रहा है विद द फ्लो चार्ट उसके लिए आप एरोज यूज करोगे और आपका जो फ्लो चार्ट है अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पे कंटिन्यू करना है या उसी के साइड में आपको कंटिन्यू करना है तो कुछ आप कनेक्टर्स यूज करोगे सो दीस आर सम सिंबल्स वी विल टेक वन एग्जांपल्स ऑफ दिस फ्लो चार्ट यू कैन सी द एग्जांपल्स this example we are going to take example is we are going to calculate the average of two numbers in the previous what the flow chart we have seen algorithm we have seen we are going to average of three numbers so consider the same algorithm here we have to first start our flow chart so we are going to start the flow chart with the help of oval symbol instead you have to write start right there we are going to take the input from the user so whenever you are going to take the input from the user or you are going to print something for that we have to use parallelogram so you can see the parallelogram is there we connect this oval to this parallelogram with the help of arrows okay so connecting or showing the direction we are going to use the arrows then I want to perform some operations so performing some operations we are going to use rectangle so here you can see what I am going to do I have taken one variable as the address and there I am going to just add two numbers and whatever numbers will be there, I am going to divide it by this. So, num1 plus num2 divided by 2. And whatever values will be given, that values are going to store into this average variable. Then, I am going to show the path now to the print average. Whatever the output I have that, and that is stored in this average variable, that I am going to print with the help of this parallelogram. And this end of the flowchart. So, in Hindi, if I have to explain this, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हमारा फ्लोचार्ट स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओवल सिंबल और अगर हमको यूजर से कुछ वैल्यूज इनपुट लेनी जैसे कि इस प्रोग्राम में हम लोग ऐसे यूजर से दो वैल्यूज इनपुट लेनी num1 एंड num2 तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम देन जो भी वैल्यू आए वो वैल्यूज के ऊपर एडिशन करनी है और उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करना है तो num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाय दो नंबर हमने यूजर से लिए तो हमको एवरेज निकालना है तो दो से उसको डिवाइड करना पड़ेगा तो num1 प्लस num2 एंड डिवाइडेड बाय 2 और जो कोई भी इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट हम लोग स्टोर करेंगे टेम्परेरीली एट वेरिएबल क्या होता है इट इज वन टाइप ऑफ कंटेनर दैट वी यूज टू स्टोर द वैल्यू टेम्परेरीली
सो जो कोई भी वैल्यू हमारी स्टोर हुई इस एवरेज वेरिएबल में, वो हम लोग प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट है, वो हम लोग शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। और जो हमने स्टार्ट किया था वो हम एंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। और जो कोई फ्लो है वो फ्लो हम कैसे शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली एरोस। सो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट। जैसे एल्गोरिथम के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, सिर्फ फ्लो चार्ट के भी एडवांटेजेस है। जैसे कि ये शो करता है आपको क्लैरिटी, ये सिंपल है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, इट इज सिंपल। देन कम्युनिकेशन, the communication is also simple with the help of only symbol. The lay person will be able to understand how the program will flow. Then process documentation. We can prepare the documentation with the help of this flowchart. Then we can solve the problems. Then it is consistent. You can say step 1, step 2, step 3. So it's showing some consistency. And then we can do the decision making with the help of decision making symbol. The disadvantages we have. Sometimes it is complex. Sometimes we are not going to show all the details, so it is lack of details. Then difficult with updates. अगर इसमें अगर मुझे कुछ स्टेप भी बीच में अगर अपडेट करना होगा तो ये मुझे डिफिकल्ट जाएगा, मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा या फिर पूरा रफ करके फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो adding something in it will be difficult. Then no performance metric, ये टाइम्स का फिक्स नहीं होगा। जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ते जाएगा आपका जो सिर्फ वन से वो यूज करके आपको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। समटाइम्स इट्स क्रिएट एम्बिग्यूटी। सो सिंपली इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी। बट व्हेन यू वर्क विद द इंडस्ट्री, यहाँ पर आप लोगों को एल्गोरिथम्स बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये सब चीजें होने के बाद ही आप एक्चुअल आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर आ सकते हैं। सो ये हो गया सिंपली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस।